Hello everyone, I am Chandresh. And I am Dinesh. Welcome to Riderz Round Table. Today we have a rider who needs no introduction. Let's welcome Mr. Deepak Gupta, the mountain man. Thank you, Chandresh and Dinesh, for hosting me at Riderz Planet. So, sir, it has been a long journey for you in the riding community. Tell us, how and when did this start? So this seed was sowed by my grandparents when I was almost in class 7th, maybe 11 years old. And I am sure many of our viewers would not have been born at that time. That is true. Stone age की बात है कि grandparents used to travel a lot. और 1970s में ट्रेंड था ट्रैवलिंग का, though it was very very less, but I thank my grandparents for taking me along on all the journeys. वो उन दिनों बोरिया बिस्तरा तो ये वर्ड आई एम श्योर 99% ऑफ द व्यूअर्स ने नहीं सुना होगा. बोरिया बिस्तरा इज अ ह्यूज बेडिंग. वो पूरा बेडिंग साथ जाता था और बस हायर करी और बस में निकल गए. एंड दे यूज्ड टू टेक मी टू ऑल द ट्रैवल डेस्टिनेशंस. जैसे मैंने बचपन में देखा है कि ट्रेन्स में वो जो आर्मी पर्सन होते थे, yes. And in 70s. And बड़े दुख की बात है कि आज के टाइम में भी in this jet age people don't travel. And this is not the case in India only. I've seen it in many countries. People don't travel. They don't know. We were in Canada in 2018, and they said, "Sir, ये Canada में है ये जो आप दिखा रहे हैं?" Yes, this is in your backyard. So people don't try to come out of their comfort zone and travel. हम 70s में ट्रैवल करते थे, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग का शौक पड़ा. And I chose motorcycle as a medium of travel. And I think men are born to ride motorcycles. So I am blessed. I could fulfill my dream, and I am still fulfilling my dream to ride the motorcycles. तो पहला मोटरसाइकिल का कीड़ा कहाँ से जागा? किस साल में जागा? So my चाचा bought a 50cc Luna moped in I think 73 or 74. I was 13 or 14 maybe. और वो घर के अंदर वो उसको पैडल मार के स्टार्ट करना होता था. आंगन बड़ा था तो वहीं थोड़ा सा चला लिया. लकीली गिरा कभी नहीं. और उसके बाद जब मैं 9th में आया तो माय अंकल यूज्ड टू कम विद अ राजदूत 175cc मोटरसाइकिल. और वो अंदर पापा के साथ ताश खेल रहे होते थे, मैं उनकी चाबी चुरा के. और एक दिन उन्होंने मुझको पकड़ लिया. बोले क्या कर रहे थे? मैंने कहा बस चक्कर. बोले सिखाया किसने? बोले सीख गए. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. So एक बार बताओ, मोटरसाइकिल का तो चलो आपने बताया कि कब आपको कीड़ा जाएगा. ये इंटरनेशनल राइड्स आपने इंटरनेशनल राइड्स मेरा जिंदगी का मकसद था. आप भी नहीं यकीन करेंगे. आई वॉज वेरी क्लियर इन क्लास 8th. आई स्टिल रिकॉल दैट टाइम. मैं क्लास में बैठा हूँ, क्या चल रहा है, मैडम पढ़ा रही है और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझको जिंदगी में क्या करना है. आई वॉज क्लियर दैट आई हैव टू ट्रेवल द ग्लोब. Or by the time I turn 50, I'll retire. Whether I have money or not money, I will travel 100% full-time travel after 50. And God has been very kind that I am fulfilling my dream, which I set in class 8th. And my first international travel happened in 1985. Wow, long time back. Yes, long time back. So 85 में I traveled Europe. Main area of travel was Italy. So guys, as Deepak ji said, he did his first international ride in 1985. So this is our topic for today. We are going to talk with him everything about international rides. And friends, let me tell you, traveling today internationally and traveling in 85 internationally is absolutely a different ball game. So guys, let's talk about his journey over the years. तो दीपक जी आपने 85 में शुरू किया, तो सबसे पहला सवाल आता है कि इंटरनेशनल राइड्स में बाइक है ना, हम बाइक से जर्नी करना चाह रहे हैं तो बाइक कैसे चूज करें. एक तो बताइए कि चूज कैसे करें, दूसरी ये बताइए कि यहाँ से लेके जाएं या वहीं पर किसी से रेंट पे लें. So very very valid and important question कि बाइक
यहाँ से लेके जाएं या वहाँ से चूज़ करें। तो व्यूअर्स, अगर आपका ट्रैवल टाइम इज़ 10 days, 15 days, 20 days, my suggestion is rent the bike at the country where you are landing. Right. Because there are many processes involved and fees involved to take your bike to the different country. Right. There are permissions, there are processes, and there is a huge fees of taking your bike to the different country, plus the transportation cost to and fro. Right. Okay. And many complications. You cannot leave your bike, you cannot fiddle with your bike. It has to come in the same situation as you have taken your bike. So these are many points which you have to take. कुछ भी गड़बड़ होता है, then probably you won't be able to take your bike next time in your entire life out of your country. Okay. So अगर लंबा duration है, like we did in 2018 for 5 months, we took our own bikes. Okay. Right. We took our own bikes. तो इसमें क्या है, मतलब कि दीपक जी, जैसे हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो हमारा एक पासपोर्ट होता है, तो हम लेके जाते हैं और उसी पासपोर्ट पे हम ट्रैवल करते हैं और वापस आते हैं। Yes. तो बाइक में भी कुछ ऐसा करना पड़ता है या? So bike is also an entity. तो बाइक के लिए भी पासपोर्ट बनता है, which is called the carnet de passage. Okay. आपको कितनी कंट्रीज ट्रेवल करनी है, उसके अकॉर्डिंगली उस पासपोर्ट में पेजेस लेने हैं आपको. Say you can have a 10 pages carnet de passage, you can have a 20 pages carnet de passage, you can have a 50 country carnet de passage. The carnet is issued for 1 year. अगर आपका स्टे उससे ज़्यादा लंबा है, then you have to reissue or stamp your carnet de passage. Okay. Without carnet de passage, you cannot take your bike or car outside the country. One, and there are many countries which require carnet de passage. If you don't have it, you cannot cross the borders. Okay. So first point we are here, like if you are going with your bike, so you need a carnet de passage for your bike. It is like a passport like you have for yourself. Yes. Second thing, if you are going for a short stay, so hire over there. The bike you can rental over there also. अब ये तो हो गया बाइक के बारे में. बाइक को चूज कैसे करना है कि अगर हमको वहाँ पे रेंटल करनी है तो किस टाइप की बाइक को रेंटल करना चाहिए? So yes, क्योंकि रेंट करना है तो the money is involved, and that too in foreign currency, which is India, you know, as compared to the European or the American or the international countries, is a weaker country in terms of currency. Correct. So बाइक आपके टेस्ट के हिसाब से चूज करनी है, नंबर 1. नंबर 2, सीसी जरूर ध्यान में रखना है. देयर आर सम कंट्रीज वेयर हायर सीसी बाइक्स मे नॉट बी अवेलेबल एंड आर नॉट अलाउड. Okay. There are many countries, almost 80% countries, where you can, CC is not the limit. Okay. But the higher the CC, the higher is the fuel consumption, the higher is the rentals. Right. So आपको अपना जेब देखना है. Correct. 1. Correct. 2, बाइक आप यहाँ क्या चलाते हैं उसके हिसाब से भी लेना है. आपको ये नहीं है कि आप रेंटल ले रहे हैं तो आप बड़ी ले लें. आप यहाँ 400 सीसी चला रहे हैं और आप वहाँ सोचे मैं 1500 सीसी या 1600 सीसी ले रहा हूँ, उसको मैनेज भी करना है. Getting into an incident in an international country, trust me, you are screwed. Very true. We had a recent example. Okay. So where a guy had an accident in a different country, and he stuck up for a month, and he could get a bail only after a month. Okay. Okay. So you have to be very careful in choosing the bike according to your riding style in India. That is what I was coming to, कि आपकी स्टाइल, आप जिस तरह की बाइक यहाँ चलाते हो वही बाइक तरह की बाइक आप वहाँ पर कंफर्टेबल है कि जिसको हम Yes, don't try to show off. Yeah. Don't be a gamma Yeah. in the international country. जो हम जिस लाइसेंस से हम इंडिया में अपनी बाइक चलाते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, क्या वही वैलिड है बाहर? Yes, we are part of group where the IDP International Driving Permit is acceptable. हमारा license, chip वाला license is acceptable. But my advice is always carry a international driving permit, which is issued by your license issuing authority. आपके जिस RTO से आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इट इज़ गिवन टू यू विद इन अ डे. और उसके बाद आपको दिक्कत आने की कोई पॉसिबिलिटी रहती नहीं है. आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर द लास्ट 7-8 years, नेवर विदाउट अ IDP.
मेरे को भी याद है जब हम 2018 में मैं और दिनुदा हम इंटरनेशनल राइड पे गए थे, हमने जर्मनी में राइड किया था, तो हमने आईडीपी बनाया था यहाँ पे। और जो हमने रेंटल वहाँ से किया था तो उनका एक रिक्वायरमेंट आया था कि वो आईडीपी के ऊपर ए क्लास मोटरसाइकिल्स का आपका अप्रूवल होना चाहिए। yes. ये जरूर ध्यान रखना। Some countries may not ask for the IDP at all, but इट इज सेफर। जैसे मैंने पहले कहा, आप दूसरे देश में हैं तो वहाँ पे कुछ भी तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, और वहाँ अगर आप फंसे तो इमेजिन अगर आप यूएस में हैं तो दैट करेंसी इज 80 टाइम्स एक्सपेंसिव, तो उतना ही पैसा लगना है आपका। तो गाइस, जब भी हम मैं और चंद्रेश जब भी इंटरनेशनल राइड करते हैं तो वी इंश्योर दैट वी डू कैरी आवर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, एंड इसको बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपने अथॉरिटी में जाके बनवा सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको बाई पोस्ट ही आ जाता है। अगर आपको बहुत कम समय है तो सराय काले खां इज नाउ दी ओनली इशूइंग अथॉरिटी। आप फॉर्म भर के ऑनलाइन उसकी कॉपी ले जाएंगे वहाँ, आपको वो इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर लाइसेंस इशू कर देते हैं। सो गाइज, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। बाहर जाने के लिए ये ज़रूर ध्यान रखें। तो दीपक जी, बाइक ले लिया हमने, परमिशंस ले लिया, लाइसेंस ले लिया, What do you suggest about the gears? गियर से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यू शुड नो विच कंट्री यू आर ट्रैवलिंग टू। लेफ्ट हैंड राइड है या राइट हैंड राइड है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूर चाहिए कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्लान दिस राइड देन। सबसे पहले तो आपने किस कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने का सोचा है, उस कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज कवर करनी है। तो आजकल आप सबके पास इंफॉर्मेशन क्लिक ऑफ अ बटन पे है, तो गूगल पे थोड़ा सा समय ज़रूर लगाएं। उसमें आपको देश पढ़ना है, उसका पहनावा पढ़ना है, उसके खाना पढ़ना है, उसका वेदर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट टाइम ऑफ द ईयर यू नीड टू ट्रैवल इन दैट कंट्री। नहीं तो अगर आपकी राइड टोटल बारिश में रही या बर्फ में रही तो आपका पैसा सब खराब हो जाएगा। ऑल्सो आई थिंक यू नीड टू नो कि उस शहर का कल्चर क्या है, ताकि आप उसके कुछ भी अगेंस्ट कुछ ना कर रहे हो। कि आपको उस देश का रास्ते, राइडिंग स्टाइल, लेफ्ट हैंड राइड, राइट हैंड राइड, रूल्स एंड रेगुलेशंस, then how to park and where to park and where not to park especially. Yes. And यहाँ हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि आप कहीं भी रात को रुके या कहीं भी रुके और आप मोटरसाइकिल खड़ी करके चले गए। So like in our recent Europe ride, we had to pay a huge parking fees. You cannot park on anywhere even for 5 minutes. तो आपको you guys are lucky you are born in a jet age. आपके पास इंटरनेट जैसा टूल है। Please do research and read about the country, talk to experienced people, ask for information and पढ़ के ही जाएं so that you go a more confident man. तो आप बता रहे हो आज तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 85 में कैसे किया आपने? 85 में कैसे किया? इमेजिन 85 में आज मैं अगर किसी राइडर को बोल दूं आपको राइड करनी है तो उसके तोते उड़ जाएंगे। ट्रस्ट मी। वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड वी वेंट टू इटली। हमारे पास रोड मैप होता था पूरा बड़ा, और उसको पेन से फिजिकल रोड मैप होता बड़ा, उसको करते थे। वी टॉक टू पीपल, और कुछ एक माय फादर वाज इन रॉ, सो ही हेल्प मी फाइंडिंग पीपल हु हैव बीन टू इटली। उनसे पूछा कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड द डे वी लैंडेड इन इटली वी ट्रैवल्ड विदाउट टिकट। वाह, अच्छा। क्योंकि आज भी और 85 में भी टिकट्स बस में नहीं इशू होती थी। अच्छा। न्यूज़पेपर वेंडर के पास से आपको टिकट का बंच लेना है। तो फर्स्ट राइड आफ्टर लैंडिंग वाज अ फ्री राइड। लकीली वी वर नॉट कॉट। तो ये उस जमाने में इंफॉर्मेशन नहीं था, पता ही नहीं था। एंड मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड बताता हूँ। वी हैड द टिकट व्हेन वी वर रिटर्निंग। वी वर ऑन अ स्कॉलरशिप टू उर्बिनो, a small town in Italy, beautiful town. और उर्बिनो से रोम was 4 hours by train. We had the ticket और हम बैठे थे आराम से। A sweet lady comes, hardly 22, 23, and asked for a ticket. We handed her the ticket. She said, "You'll be fined." I said, "We are having a ticket." No, but it is not stamped. जो आज की डेट में अगर आप देखें तो लोकल्स में या उसमें you have to get it punched. आपको उसको पंच करना है। सो वी वर फाइंड इन स्पाइट ऑफ एवरी ह्यू एंड क्राई। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, वी आर फॉरेनर्स, लैंग्वेज वाज अ इशू। दे नेवर, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, दे फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसलिए रिसर्च करना,
पढ़ना कैसे आपको ट्रैवल करना है, क्योंकि आप बाइक पे तो हमेशा नहीं ट्रैवल करेंगे। अगर आप सिटी में रात को चले गए तो आप लोकल देखने जाएंगे, साइट सीइंग देखने जाएंगे, बस में भी ट्रैवल करेंगे, ट्रेन में भी ट्रैवल करेंगे, तो आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए, हाउ टू बाई द टिकट्स, वेयर टू बाई द टिकट्स। तो अदरवाइज यू आर इन अ रिसर्च मेस। करना मतलब कि Research becomes a very important key factor. Trust me, we took almost 8 months to plan our ride of 5 months, Alaska to Antarctica. 8 months. तो अलास्का टू एंटार्क्टिका इज क्रॉसिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दैट्स अ ह्यूज थिंग व्हिच यू डिड. So I totally understand the amount of planning that must have been involved. Yes, and we had to research every country. Yes, there were so many countries to pass The through. rule changes, the lane changes, right to left, left to right, and the environment changes, the weather changes. So if you don't study, you will be stuck. So number 2 point, what Mountain Man has told us. How to keep your bike and your valuables safe. Yes. So you may get an accommodation for $20, but your parking is in open, unsecured. Yes. I make it a point, I would pay $100, but my bike should be properly safe if I'm carrying my own bike. Because the bike is gone, your trip is gone. Very true. Your trip is gone. And you don't travel internationally with your bike every now and then. So the most important is have a secured parking. Second is keep your passport and documents safe. If they are lost, your trip is over. ये तो खैर ट्रैवलिंग के अंदर मैंने भी मतलब कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल जैसे करता हूँ जब भी, तो मैंने ये चीज़ हमेशा वो रखा है, चाहे मेरे से कोई ट्रैवल कर रहा है मैं उसको कहता हूँ अपना पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए. उसके अलावा कुछ भी आपको हो जाएगा तो वो सब कुछ मैनेज recover हो सकता है, मैनेज हो सकता है. बट पासपोर्ट एक बार अगर खो गया तो दैट विल बी अ बिगर. यस, पासपोर्ट खो जाए, यस, मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में स्टक हो गए, बट यस द प्रॉब्लम इज देयर, देन यू हैव टू गो टू द इंडियन एम्बेसी. आपका आगे का प्लान आइटनरी सब फेल हो गई, सब फेल. तो जो बाइक की इंश्योरेंस है, हाउ डू यू डील विद दैट? जब आप इंटरनेशनल जाते हो तो आपकी बाइक, अगर आप यहाँ से अपनी बाइक लेके गए हैं तो उसके इंश्योरेंस का क्या प्रोसेस है, और जब आप किसी और से रेंटल पे बाइक ले रहे हो तो वो इंश्योरेंस कैसे करना चाहिए हमें? सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ जो हम अपनी बाइक ले जाते हैं. सो जो इंश्योरेंस हमारी यहाँ इंडिया में है, दैट इज नॉट वैलिड देयर. सो वेन एवर यू आर क्रॉसिंग बॉर्डर्स of different countries, every country has a different scenario. Like US, we took the insurance here only, which was valid in entire US. So when we entered Canada, we took the insurance of Canada. When we entered Mexico, you will get that insurance at the border itself. Very nice. You won't get the entry without the insurance. Like in Costa Rica, they never asked for the insurance, but we still took the insurance because अगर वहाँ कुछ हो गया तो you are stuck. You are stuck. So insurance, guys, trust me, insurance is a key part. Without insurance, never ever travel. Never ever travel. क्योंकि and take the comprehensive insurance. Take the comprehensive insurance. Now come to the second part, when you are renting the bike. When you are renting the bike, take 100% comprehensive insurance covering everything. Because वहाँ अगर कुछ हो गया तो you are at their mercy. आपका 100 रुपए का खर्चा हुआ है, they may ask for 1000 rupees. So insurance, no compromise on insurance. That it may be a bigger part, थोड़ा सा expensive लगेगा उस समय, but without insurance, never ever travel. हाँ, तो हमने भी जितनी इंटरनेशनल राइड्स की है, हम अभी तक इंडिया से अपनी बाइक लेके नहीं गए हैं, लेकिन मैं और चंद्रेश जब भी इंटरनेशनल राइड किए हैं तो हमने हमेशा फुल कवरेज वाली इंश्योरेंस ही ऑप्ट किया है ताकि कहीं भी हमें दिक्कत ना आए. तो इसमें ये थर्ड पॉइंट निकल के आता है, जब हम अपनी बाइक चूज करते हैं तो हमारी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बाइक होनी चाहिए जिसको हम यहाँ पे भी राइड कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं. और दूसरी चीज उसके साथ इंश्योरेंस जो होनी चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए. वो ऐसा नहीं हो कि हमको कोई दिक्कत हो तो उसके अंदर परेशानी हमारी और बढ़ जाए विदाउट इंश्योरेंस. और एक चीज़ और, क्योंकि बाइक आप रेंट लेंगे तो आप वहाँ जाके अगर रेंट लेते हैं तो आपके दिन खराब होते हैं. इंटरनेट पे देयर आर डिफरेंट साइट्स वेयर यू कैन सेलेक्ट और यस. सो ऑनलाइन रेंटल के लिए यू विजिट द गूगल, आप उस कंट्री पे जाएं और रिसर्च करें, क्योंकि देयर आर मैनी कंपनीज. आपको सेम बाइक, क्योंकि
पैसा इन्वॉल्व है एंड वी आर दी वीकर इन फाइनेंस इन रुपीज, तो आप रिसर्च कर लें, उसके अकॉर्डिंगली आप बाइक लें और प्री बुक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज यू सेव टाइम And you get to choose the bike you want. because every day is costing you dollars and euros. तो आप अगर पहले से करेंगे तो यू आर वेल सेटल्ड, आपने लैंड करना है, सीधा बाइक लेना है एंड देन यू आर गुड टू गो. एंड आई थिंक आप जब पहले से सर्च कर लेते हो तो आप बाइक देख लोगे कि कौन सी बाइक आपको मिल रही है वहां, और पता चला जब आप टूर कंपनी में पहुंचे वहां आपकी चॉइस की बाइक ही नहीं अवेलेबल है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, they internationally I have traveled so much, they are fair people. जो बाइक दिखेगा वही मिलेगा and they will not cheat. The bikes are generally in good condition. स्पेन में हमने कितनी चली हुई बाइक भी मिली थी हमें, लेकिन फिर भी they were very nice. Recently one of our bikes had clocked more than 60,000 kilometers, but we still did 5,000 kilometers without a hitch. हमने इंश्योरेंस, बाइक, ये सब तो बात की. What do you suggest? मतलब कि कई लोग आते हैं पूछते हैं कि मैं सोलो राइड करता हूँ, मैं किसी के साथ जाऊँ, तो हाउ शुड वन गो? मतलब ग्रुप राइड होनी चाहिए या सोलो होनी चाहिए? देखिए, आपको कैसा एक्सपीरियंस? I travel, मुझे तो I can travel in group, I can travel in solo, I can travel with 2 or 3 people. But my advice to every individual is, solo is a tough task. Because at one part of time, whether वो एक दिन में भी हो सकता है, वो 10वें दिन भी हो सकता है, you tend to think, why am I here alone in this part of the world? And that moment can be very very nasty, क्योंकि आपका हिम्मत और वो हौसला टूट जाएगा उस समय, and you may even cry. और सोलो तो आप हमेशा होते हैं, चाहे आप 20 लोगों के साथ हैं, चाहे 3 लोगों के साथ हैं. बाइक में तो अब सोलो ही हो चल रहे हो. बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द जर्नी, उस दिन की 3 घंटे की राइड या 6 घंटे की राइड या 8 घंटे की राइड, यू हैव समवन टू टॉक टू, शेयर योर अप्स एंड डाउन्स ऑफ द डे. बट व्हेन यू आर टोटली सोलो, it's a different ball game. So my piece of advice is, travel solo only if you are confident, you are an experienced traveler. I think even if कुछ ऐसा हो जाए जहां आप अनफॉर्चुनेट circumstances बहुत हैं, तो साथ में हो तो ज़्यादा हमारे साथ. सोलो ट्रैवलिंग के लिए you need to be a person who can talk to people. If you don't love talking to people, absolute no for a solo travel. Again, foreign country can be a language barrier. If you are traveling through some countryside. नहीं, but language barrier का तो दिनेश जी ऐसा है कि now we have the Google Translator. Very true. So आप अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ, हम इटली ट्रैवल कर रहे थे फॉर बिजनेस, और वहाँ पे हम एक कंट्री साइड पे स्टे किया, तो शी डजंट नो द इंग्लिश एंड वी डिडंट नो द इटालियन, so there was a Google Translate, तो हम उस पे टाइप करते थे, उसको इटालियन में पता चलता था. तो there are different tools. Today we have tools. Yes, we have tools. So solo is absolutely no for an introvert person. अगर सोलो है, अगर आप लोगों से बात करना पसंद करते हैं, तब आप जरूर जाएं, और खुद अकेले से खुद से बात करना पसंद करते हैं, तब जाएं. Solo has its own ups and downs, pros and cons. So solo is absolutely for a limited number of people, more experienced. Otherwise I would not advise. आप अगर अपनी बाइक को हैंडल करना जानते हैं in any eventuality, तो आप जाएं, और अपनी सेहत अगर आप हैंडल कर सकते हैं तब आप जाएं अकेले, because there is a very thin line between adventure and stupidity. So solo आज की डेट में ये टर्म बड़ी जल्दी यूज होता है, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ. Even after more than 40 years of traveling, I think 10 times whether I should do it solo or not. My mental frame of mind is absolutely correct or not, because solo traveling is not a easy thing. तो इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे माइंड में आता है कि हमको किसी को भी जब राइड करनी है इंटरनेशनल जाके, तो वो ग्रुप, मतलब कि वहाँ का कोई टूर पैकेज ले है या वो खुद सेल्फ प्लान करे, मतलब चाहे ग्रुप जाए चाहे सोलो जाए. हम इंडिया से भी कोई ट्रैवल एजेंसी होती हैं जो इंटरनेशनल राइड्स प्लान कर रही हैं, या वहाँ की ट्रैवल एजेंसी है जो इंटरनेशनल राइड प्लान कर रही है, या हम खुद प्लान करके चल रहे हैं? कैसे करते हैं? इससे पहले मैं पिछले वाले को कंप्लीट कर देता हूँ. फॉर बिगनर्स और लिटिल एक्सपीरियंस्ड, आई वुड ऑलवेज से गो विद
experienced people. Right. Go in groups. Right. Chota group ho is more advisable. Bada group for long distances, I never advise. Right. Never ever travel with people with whom you have not traveled locally. Yes. Because आज की डेट में मियाँ बीवी की नहीं बनती, हाँ, बिल्कुल. तो फ्रेंड्स की कैसे बनेगी? And where you two or you three or you five people are alone in the entire world. So travel with people with whom you have traveled locally. Right. आपकी बॉन्डिंग हो उनके साथ. अब आपका ये वाला सवाल कि whether to go in a package or self plan international travel. Yes. My first travel in 1985 was a absolute self planned travel. Okay. कह सकते हैं कि हम थोड़ा खपती हैं और because money had always been in our mind. Organized or package trips are always expensive. There is a fees involved of the planner. Yes. So when I am traveling in a group, because everybody cannot plan as I can plan or anyone can plan. So when you are in a group, there are handicaps. Right. Many people would not be able to plan. That is why they are traveling in group. Yeah. So उसमें आपको I will always advise hire a planner or a organized trip. Go by organized trip. Yes. That is certainly 20 to 40% expensive, but convenience come at a cost. Yes. Comes at a cost. So, You are your all the problems are taken up covered by the planner. Yeah. So you don't have to absolutely plan. You go and you complete your trip and come back. पैसा दिया and over. So I remember first time we went for international trip. तो प्लानिंग तो हमने भी की हमारे साथ, लेकिन हमारा एक हेल्प था. जर्मनी में हमारा एक फ्रेंड था. Yes. So he helped us plan. Yes. So we were fortunate enough कि we planned our ride, but with the help of someone who was locally over there, available over there. Yes. And we went very smoothly. And the second time, we were able to do it ourselves because of the experience we had over there. So For self planning, start with short tours. yeah, short tours. Yes. You become experienced. Yeah. You tend to know your shortcomings. Yes. Improve them. Yeah. Travel a bigger journey. Yeah. Then travel internationally. Do not plan an international travel right away. Right away. Your first journey should not be international planning. Yes. So we do have tour operators Yes. available in India who Yes. are doing international Yes. rides. These days you have so many. Yeah. You have so many. Yeah. So, if you are new to international riding, go with an expert. If you have already done and you are confident enough to plan a ride yourself, do it. There are different tools available. Yes. As I said, you have to research, Yes. study, talk to people who have traveled. There are people who will guide you. Yes. And if you are confident enough, do plan. There is absolutely not an issue. Yes, you may find some problems, Yeah. but you can travel. If I can travel, you can also travel. You will save, definitely save 20 to 40% of travel, the cost. Secondly, then you can book your stays, because stay is important and the most expensive part in your travel. You may tend to stay in a $10 accommodation, but the traveler, the agent may be giving you a $100 accommodation. So that is where you save you cut your costs. So तो कॉस्ट के ऊपर जब बात आती है तो मनी है yes, है ना. तो हम पैसा कैसे लेके जाएं? travel तो पैसा लगता है. पैसा लगता ही है ना. So how do we? So previously तो हम सब कैश कन्वर्ट करा के लेके जाते थे. जी. आज की डेट में in 40 years, 85 to 22 is almost 40 years of my international travel. This time, because my father was ill, so I never knew whether I would be able to take this trip or not. Within 3 hours, I had to prepare myself and I traveled. I had no time to take the currency. And in 40 years, this time I traveled with only one card. And it is absolutely easy. No problems at all. No problem. Even you can buy your bus ticket, train ticket, hotel reservation, site entries, museum entries, everything by card. So guys, have an international card from your bank. Every bank provides a Forex card.
Yes, do study, do ask a lot from the bank because there are costs involved, surcharges involved. So buy a card which has the least surcharge. One, and two, keep some currency, a little currency in case of emergency, because there may be taxis or Ubers who say we take only cash. But yes, you can travel entire world now with the card. अगर आपको करेंसी चाहिए भी, that card entitles you to take out the money, take out the currency. Yes, the charges are a little expensive if you take the currency, but you can travel with the forex card. Approach your bank with whichever bank you are banking. Every bank now provides a forex card. So एक बात और बताइए कि कार्ड्स की बात होगी, अब वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए और ट्रैवल के लिए जीपीएस, आप जीपीएस यूज करते हो या कोई और चीज यूज करते हो कैसे? So उससे पहले your card, if you're carrying your card is your mean of payment. So that card has to be as secure as your passport. I always carry a backup. I keep them at two places. If my card is lost, I have another card. So please guys, do not take any chances कि आप एक खाली कार्ड लेके जा रहे हैं. Take two cards or enough currency. मनी तो आप दो जगह पे रख सकते हो, पासपोर्ट एक ही जगह पे रखते हैं, तो पासपोर्ट का और ज्यादा ध्यान रखना. Yes. So guys, there are so many things still left to be covered about international ride. हम सब कुछ इसी एपिसोड में नहीं कवर कर सकते. अगले एपिसोड में हम चार चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे. नंबर 1 इज द लगेज, सेकंड इज द राइडिंग एड, थर्ड इज आवर कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज वुमेन राइडिंग इंटरनेशनली. So guys, do come out of your comfort zone and travel. Travel makes you a stronger human being. And keep watching our next episode. Ride safe.